દાવેદારની કહાની અશેખ તેજુનભાઈ અત્તારની જબાની। આ દાવેદારનું અમલ મૌલાના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકા રિદવાનુલ્લાહ અલૈહિની ખુશી મુતાબિક નહોતું, તેસી મુમિનીન એનાસી દૂર થાતા જ ગયા। સુનો આ જબાની। मौलाना बुरहानुद्दीन आका 1401 ની जामे अनवरनी इफ्तिताना बाद आपे मंशा आपनी जाहिर की दी। जाहिरीन भी ज्यादा से ज्यादा तादाद ना अंदर यहाँ आवे अने यहाँ मुकिमीन मुमिनीन भी सगला तिजारत वास्ते ज्यादा से ज्यादा तौर पर यहाँ वसवाने हाजिर थाय। मौलाना बुरहानुद्दीन आका ना कसर मुबारक सादात किराम ना सगला ना फ्लेट्सो अने साहेबो अने सगला मुमिनीन सगला आ मौलाना बुरहानुद्दीन आका ना कसर मुबारक ना साया ना अंदर मोहन नसीर ना अंदर एक शमल एक साथ में रहीने हमें आ मिसर ना अंदर वसी रहा था। हवे आ दावेदार जे 1406 ना तकरीबन साल ना अंदर एने भी मकान लेवू चाहतो तो मकान मोहन रसीद में लेतो, मगर एम नहीं। ये मकान हिलियोपोलिस जे आ मोहन रसीद से दूर छे ए जगह पर खास ए मकान लीधु। आ दावेदारे मकान हिलियोपोलिस में काम लीधु ताकि एने आ हवे हमने एहसास થાય કે એને આ આપના સંબંધમાં સાથે જોડાવું જ નહોતું, તે વાસ્તે એ દૂર લીધું। અને મુમિનને જે વખતના અંદર પોતે મિસર આવે અને હસબ રજાના વાસ્તે એના ઘરે રજા વાસ્તે જાય તો जिल्लतના वास्ते कलाको बाहर दरवाजाना बाहर हम खड़ा राखे ताकि हमने ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचे। कि जे वखतना अंदर भी ए मिसर आवे तो हम सगलाने मालूम है कि एने तशब्बी यानी बराबरी करवानो घणो शौक। मिसर आवे तो हमेशा मिसरना अंदर जियारत में या मसाजिद ना अंदर नमाज ना वास्ते या कोई एक मजलिस होय तो मजलिस ना वास्ते बैठक होय तो बैठक ना अंदर जे गाड़ी होय ते गाड़ी भी जे मौलाना बुरहानुद्दीन आका ना वास्ते बिछाववामां आवे ए अमर करे के एवी ज गाड़ी मारा वास्ते बिछाववामां आवे। मेहराब ना अंदर जामे अनवर ना अंदर मेहराब ना अंदर या बीजी मसाजिद ना अंदर नमाज पढ़ावाने जे गाड़ी मौलाना बुरहानुद्दीन आका वास्ते बिछाववामां आवे जैसा के लक्ष्मी मसल्लो ए मिसल ए एना वास्ते अमर करीने सगलाने खास के हमने मन हम मारो मसलो भी ए मिसल बिछाववामां आवे। मगर आहिस्ता आहिस्ता आ सगला अमलो देखिए तो हमने ए दूर करी रह्यो था। जुमानी नमाज थाय आम तो मौलाना बुरहानुद्दीन आका ने तकियत खास सतना बिलादुल अरबिया ना अंदर जाए तो खास मौला फरमावे के सगला तकियत नो घणो खास ध्यान राखे। मगर आ दावेदार जे वखत ना अंदर इमाम हुसैन ना बाहर सूर छे तो आ दावेदार जे वखत ना अंदर भी आवे तो बाज वखत तो सूर बंद भी होय मगर एना वास्ते आ जबरन आ सूर खोली ने अंदर से जियारत करे। जुमानो दिन भी होय तो जानी जोईने अजान ना करीब ए आवी ने वहां पर अंदर सूर ना अंदर आवी ने वहां पर पोते अने पोताना अहल आयाल ना साथ ना अंदर जईने नमाजो पढ़तो होय, कसीदाओ जोर जोर से पढ़े, वहां खुतबो पढ़ाई रह्यो होय या वहां कुरान मजीद की तिलावत थाय मगर आ शख्स अंदर बैठी ने जोर जोर से कसीदाओ पढ़े ताकि आ सगला ने खलल थाय। अने इतनु ज नहीं मगर आ शख्स तो पोताना फरजंदो अहल आयाल ने सगला ने जियारत करे हत्ता के बहिराओ अने लोगो सगला देखे अने ए पोते जियारत जયારે હાથથી કરાવે તો આ સગલા અવામના લોકોને ઘણું તાજ્જુબ થાય અને સગલા કલામ કરે કે આ સગલા આ અઝમતો સુલતાન ના તાબીન લોકો કેવા છે કે આવા અમલ જુમાના દિનના અંદર જ્યારે કુરાન અને આ સગલી ખુતબો પઢાવવાનો ટાઈમ છે અને આ મિસલના એ અમલ કરી રહ્યો છે। આ દાવેદાર બેતુલ મુકદ્દસ ગયો અને वहां पर जे 1401 ના અંદર મૌલાના બુરહાનુદ્દીન આકા કુબતુ સખરાના નીચે જે જગામાં રસૂલુલ્લાહના મહેરાબ છે અને જે જગા પરથી 1,24,000 અંબિયાને આપે નમાઝ પઢાવી वहां पर
मौलाना मसल्ला ने वहां बिछावવામાં આવ્યો. मौला नीचे तशरीफ लाए ईशानी नमाज वास्ते तो बे यदे शरीफ आपे आपना हाथ मुबारक थी मसल्लो ने नीचे કરીને એમ ફરમાયું કે આ તો ઘણી અઝમતની જગા રસૂલની જગા છે. આપણે તો એના અતના ગુલામ ઇતનો તવાઝો. અને આ દાવેદાર જે વખતના અંદર 1408 ગયો તો એનો મસલ્લો બિલકુલ લગાવીને મહેરાબના લગાવીને વહાં પર ખડો રહ્યો. તો ખિદમત ગુજાર જે મિસરના હતા જે ખિદમત કરે છે આ બેતુલ મુકદ્દસ એ તો અરજ બી કીધી મગર આ દાવેદાર એ આ કબૂલ કીધું નહીં. તેના સબબ અમને એમ થયું કે જે મોલા અમલ ના કરે અને આ દાવેદાર તાદી કરીને તો એના વાસ્તે દોરી શું એના વાસ્તે આપણે ડિસ્ટન્સ પેદા ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. તો આ સગલી ચીજો દેખીને એક મિસલનું અંદર ને અંદર એક એના વાસ્તે એક દૂરી હટી જ ગઈ. તો હટતા કે ફરઝનોને બી એમ કે આ સગલું અમલ બરાબર નથી.